we will discuss reactions of haloarenes or aryl halides. These haloarenes or aryl halides are less reactive towards nucleophilic substitution or reaction when we compare them with the haloalkanes. The less reactivity shown by these haloarenes towards nucleophilic substitution reaction is because of the following reasons. So, what is the first reason? The first reason is a resonance effect. So, what is meant by this resonance effect? So, we know that the halogen attached to the benzene ring in aryl halides or haloarenes has lone pair electrons. These electron pairs of the halogen, they interact with the pi electrons of the benzene ring. That means they are in conjugation with the pi electrons of the benzene ring and give various canonical or resulting structures like this is Cl, so these are resonant structures, canonical structures. Here, if we observe here, what we observe here? Here Cl bond to Cl bond, जो यहाँ पर C और Cl bond यानी C हेलोजन बॉन्ड यानी C और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है यहाँ पर CCl बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड एक्यूरस पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर. आप देखो यहाँ पर ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ये इसको एक्वायर करता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर एक्वायर करता है ये because of the resonance, because of this resonance. इससे क्या होता है? The bond cleavage जो होगी, bond cleavage that means CCl bond cleavage जो होगी ना in haloarenes, it will be difficult than haloalkanes. Therefore, they are less reactive towards nucleophilic substitution reaction. आपको मालूम है जब ये डेवलप करता है, इसको डेवलप होता है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर. आपको पता है CCl डबल बॉन्ड इज डिफिकल्ट टू ब्रेक देन द CCl सिंगल बॉन्ड इन haloalkanes. So therefore these haloarenes are less reactive than haloalkanes. नंबर सेकंड इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट जो है दैट इज difference in hybridization of carbon atom in CX bond. जो CX बॉन्ड है ना, C और जो हेलोजन के दरमियान बॉन्ड है ना, इसमें जो ये कार्बन है उसकी हाइब्रिडेशन होती है, इनमें डिफरेंस है. अगर हम हेलोअल्केन्स और हेलोएल्केन्स में फर्क करेंगे सो इस कार्बन की हाइब्रिडेशन डिफर करती है. बिकॉज ऑफ दैट रीजन हेलोएरीन जो है ना दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. सो आई विल एक्सप्लेन दिस अ बिट. इसको हम एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा बहुत. If I take here, this is chlorobenzene.
this is chlorobenzene, this is CHHHCl, this is हेलो क्लोरोमीथेन है ये। यहाँ पर जो ये कार्बन है, ये वाला कार्बन, दिस इज टू विच क्लोरीन इज अटैच्ड, दैट इज CCl बॉन्ड। यहाँ पर जो कार्बन, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड हेलो एरीन में। इस केस में ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सो इस केस में जो यहाँ पर जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को अटैच जो क्लोरीन है ना इन हेलो एरीन्स, दिस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैज मोर s कैरेक्टर, इसका s कैरेक्टर ज्यादा होता है, therefore it is more electronegative, so more s कैरेक्टर, इसमें s कैरेक्टर ज्यादा है, therefore it is more electronegative, ये more electronegative है। Therefore it holds the shared electron pair between, that it holds the electron pair of CH bond, जो CH bond की इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको ये होल्ड करता है टाइटली। then sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इन हेलो अल्केन्स, जिसमें s कैरेक्टर ज्यादा है, जिसमें s कैरेक्टर कम है as compared to this, so this sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इन हेलो एरीन्स has more s character, it is more electronegative, therefore it holds the electron pair of CH bond more tightly than sp3 hybridized carbon in halo alkanes, therefore the bond length, जो bond length है, इन bond length जो यहाँ पर है, the bond length gets shorter, यहाँ पर जो bond length है ना वो कम हो जाती है, that means यहाँ पर bond length that is 169 pm, अगर हम यहाँ पर देखिए it is 177 pm, so we know that the shorter bond is difficult to break than the longer bond, यानी जो short bond होती है वो break करना होता है मुश्किल than the longer bond, so here the CH bond is short in haloarenes as compared to haloalkanes where the CH bond is longer, so the shorter bond is difficult to break than the longer bond, therefore haloarenes are less reactive towards nucleophilic substitution, इसलिए वो nucleophilic substitution की तरफ उनकी जो tendency है that is low, वो low tendency होती है उनकी towards nucleophilic substitution haloarenes because of this shorter bond, shorter CH bond. Number third reason, तीसरा reason जो है that is instability of phenylcation. Phenylcation की instability, what that means, उसका क्या मतलब है? अगर here थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इसको, मतलब haloarenes में if I take this haloarene है ये, this is halobenzene, haloarene है ये, for example if phenylcation is formed, अगर phenylcation हम यहाँ पर बनाएंगे by self ionization, हम यहाँ पर phenylcation बनेगा, this is phenylcation plus X minus, ये बन गया by self ionization, यानी इसकी अगर self ionization हो जाएगी तो फिर यहाँ पर phenylcation बनेगा, phenylcation है। This phenylcation जो है it is not stabilized by resonance, इसको resonance stabilize नहीं होती, यानी ये phenylcation जो है ना ये stable नहीं होता है by resonance, so यहाँ पर resonance possible नहीं है, यहाँ इसकी stability possible नहीं है by resonance इस phenylcation की, therefore यहाँ पर जो SN1 mechanism है that is ruled out, उसको हम rule out करते हैं SN1 mechanism को, यानी nucleophilic substitution unimolecular, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है वहाँ पर जितना वहाँ पर कार्बोकैटायन वहाँ पर होगा स्टेबल उतना टेंडेंसी ज़्यादा है टू शो SN1 मैकेनिज्म। यहाँ पर जो इसकी जो स्टेबिलिटी है phenylcation की that is not possible due to resonance, therefore it is unstable, ये unstable है, therefore SN1
reaction is SN1 mechanism here ruled out. So we can say that these haloarenes, because of this instability of the phenylketone, do not show are less reactive towards nucleophilic substitution reaction. Number fourth and the last reason we can say here, that is arenes जो है ना, arenes, that means जो arenes है fourth, these are electron rich, ये electron rich होते हैं, electron rich होते हैं, rich species. Masala, I write here, this is chlorobenzene. This benzene is this is attached to chlorine, therefore it is electron rich. So nucleophile जो होता है nucleophile, they are also electron rich. ये भी electron rich, they are also electron rich species. ये भी electron rich species होते हैं. Electron rich species. So because of the possible repulsion between the nucleophile and the electron rich arene, electron rich benzene, because of this possible repulsion, because both have same charges, we know that same charges repel. Because of this possible repulsion, it is less likely for the electron rich nucleophile to approach. अब इसको जो approach करता है nucleophile, so मुझे लगता है कि जो approach होगा nucleophile का, that will not be very easy, that will be difficult. Therefore, when the nucleophile does not approach this, so we can say that because of the repulsion, we can say that haloarenes are less reactive towards nucleophilic substitution. Here the nucleophile does not approach because of the possible repulsion. So that will result in the less reactivity of the haloarenes towards nucleophilic substitution. So in short, अब हम कह सकते हैं haloarenes are less reactive towards nucleophilic substitution because of origin aspect, because of difference in hybridization of carbon atom in CX bond, because of instability of phenylketone, because of the electron rich benzene ring present in them. Okay.